एवरीवन, वेलकम बैक टू शौर्य। और आज फिजिक्स फॉर आईआईटी एंड नीट में मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? लेट्स से कि किसी चार्ज को कंसीडर करते हैं। ओके, किसी पोजीशन पर एक चार्ज पुट है हमारा, जिसे हम सोर्स चार्ज मान सकते हैं। तो किसी चार्ज के चारों ओर एक ऐसा फील्ड होता है जिस फील्ड में अगर मैं और कोई चार्ज लेकर आऊँगा तो वो जो चार्ज लेकर आया गया है वो सोर्स चार्ज की वजह से या तो अट्रैक्शन फील करेगा या रिपल्शन फील करेगा। तो ऐसे एरिया को सोर्स चार्ज का हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। सो द फील्ड अराउंड एनी चार्ज इन विच सम अदर चार्ज if brought then it feels force of attraction or repulsion is called the electric field of source charge. Okay, so we are talking about electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली किसी चार्ज के चारों ओर वो एरिया होता है जिसमें कोई अदर चार्ज पुट करने पर या तो वो चार्ज पर्टिकुलर चार्ज के साथ जिसको हमने पहले बताया उसके पास में आएगा, यानी कि अट्रैक्ट होगा, या इससे रिपेल होगा, उसे हम उस पर्टिकुलर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। लेट्स सपोज दैट दिस वी हैव सच चार्ज। ओके, आई हैव डिनोटेड दिस बाय Q, कैपिटल Q, और इसे बोल देते हैं हम सोर्स चार्ज। ओके, अब सोर्स चार्ज के चारों ओर ऐसा फील्ड होता है, ऐसा एरिया होता है जिसमें अगर मैं कोई और चार्ज लेकर आऊं, लेट्स से Q नॉट इज अनदर पॉजिटिव चार्ज, तो वो या तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा। अब अगर ये Q नॉट जो चार्ज है वो इसके सिमिलर नेचर का है, मीन्स दिस सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव एंड दिस Q नॉट इज ऑल्सो पॉजिटिव, देन दिस विल बी रिपेल्ड बाय इट। एंड इफ this source charge is positive and this is negative, then this will be attracted toward it. So in short I can say electric field is the area around any source charge in which some other charge is put and it feels a force of attraction or repulsion, then that field is called the electric field of this source charge. Okay, now comes to how we measure this electric field. How we measure this electric field? So उसके लिए हमारे पास एक physical quantity होती है which is called electric field strength. Electric field intensity. Okay, electric field intensity, and this is denoted by E vector. So basically ये electric field intensity क्या होती है? ये जो कोई सोर्स चार्ज है इसके चारों ओर जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें कोई और चार्ज या तो अट्रैक्शन फील करता है या रिपल्शन फील करता है, ओके, उसकी जो स्ट्रेंथ है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म्स में मेजर करते हैं। बेसिकली इन शॉर्ट आई कैन से दैट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी सोर्स चार्ज is measured by electric field intensity. It is denoted by E vector. Okay, and basically this is defined as the force experienced by this unit positive test charge. This charge is called, this is an specific charge and this is called unit positive test charge. Okay, this has certain property. The force experienced by unit positive test charge in the field of some source charge at a distance is called electric field intensity. So electric field intensity is E vector equals to force experienced by this charge. So we will write F vector per unit test charge. This is formula for electric field intensity. Okay, so I told you that here this positive unity test charge has some property. This unity test charge is so small that this does not affect the position of this charge. It means this is similar to this charge, but this applies force on this, but this will not apply force on this, और we may say कि ये जो इस वाले पर इतना कम फोर्स लगाता है कि इसकी पोजीशन को चेंज ये नहीं करता। मीन्स इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पोजीशन पे हम इस वाले चार्ज से टेस्ट करते हैं, बट ये वाला चार्ज ऐसा होता है कि ये इसकी पोजीशन को चेंज नहीं करता। सो वी कैन से दिस इज वेरी स्मॉल। ओके, सो मोर प्रिसाइजली दिस फॉर्मूला कैन बी रिटन एज दिस Q नॉट टेस्ट चार्ज इज वेरी स्मॉल, सो इट कैन बी रिटन एज लिमिट
q naught tends to 0 and F vector upon q naught. This will be the formula for electric field intensity, and electric field intensity basically measures the strength of electric field due to any source charge. As due to this charge we are testing testing the electric field of this source charge, that's why this is called test charge. Okay, this is called test charge. And of course I already told you that this is very small, it is so small that its value tends to 0. Now we will talk about its SI unit. What will be the unit of electric field intensity? Its unit will be unit of force divided by unit of charge. It will be Newton per Coulomb. Okay, it has another unit which is volt per meter. Okay, later on I will tell you that from where this volt per meter comes. Okay, so these are the units, and now we will talk about its dimensional formula. So for dimensional formula of E, we will have to take dimensional formula of force, which is ml t minus 2, divide by dimensional formula of charge, which used to be at. Okay, now we will put these in numerator, so it will be ml, and t will increase by 1 power, so it will be minus 3, minus 2, and it will be minus 1, so it will become minus 3, and a minus 1. This will be the dimensional formula for electric field intensity. Okay, यहाँ पे मैं आपको डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूँ, डेफिनेशन के लिए हम आपको नोट्स अवेलेबल कराएंगे, जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया जाएगा टेलीग्राम का, उस लिंक पर आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे. तो आपको समझने की ज़रूरत है इन कॉन्सेप्ट्स को, आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है. नोट करने के लिए आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, उनसे आप नोट कर सकते हो या नोट्स को संभाल के रख सकते हो. उसके अलावा जो प्रीवियस वीडियो हमने बनाई हैं फिजिक्स फॉर IIT एंड नीट, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उनको भी आप एक बार गो थ्रू हो जाओगे. और उसके अलावा हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी साथ के साथ करते चलेंगे. ओके, सो आई थिंक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको समझ में आ गया होगा. नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ मोनो चार्ज. ओके, ड्यू टू अ सिंगल चार्ज. सिंगल चार्ज मीन्स मोनोपोल. ओके, if we have only one charge, then at certain distance, this distance, let's suppose I have taken this distance to be small r. So r distance पर इस चार्ज की वजह से क्या इसकी वैल्यू होती है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, उसको निकालने के लिए इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे. इट मीन्स हाउ मच फोर्स दिस सोर्स चार्ज इज अप्लाइंग ऑन दिस. This will be value of F, and then the F will be divided by Q naught. I will get the electric field intensity due to this charge at this position. So we will have force is equals to Coulombian force. It will be 1 upon 4 pi epsilon naught. Between this source charge and this test charge, it will be capital Q naught upon R square. Okay, this will be the value of force, and its direction will be R cap. R cap, why R cap? Because direction of this electric field intensity is in the terms of this force experienced by unit test charge. As our source charge is positive, and in which direction this source charge will move due to the force applied by this charge on this charge, that will be the direction of electric field intensity at this position. And we know that this is positive, and unit test charge will always be taken as positive. So unit test charge will be move away from this. That's why this will be directed away from this charge, and it will be given by R cap. Okay, so putting this value into this equation, let's say this is equation first, we will write, putting in equation first, we get, putting in equation first, we will get E vector is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught capital Q naught upon R square, and divide this by Q naught. So it will be cancel out. So it will come out to be E vector is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught and capital Q upon R square R cap. This will be the value of electric field strength due to source charge this at the position of this. Okay, is it clear? Okay, it is so simple and it must be clear. If I want to
plot a graph between electric field and position. So I can see this is constant, this whole value is constant, and this is also constant. So from here we get E vector is directly proportional to 1 upon r square. Okay. So the basically graph between electric field versus, if we say electric field versus 1 upon r square, then this will be basically directly proportional, something like this. Okay, because E vector is directly proportional to 1 upon r square. Now let's say if we are to draw a graph between E vector and r position. Okay, so it is decreasing with r square, so the graph will be something like this. Okay, this is the graph between E vector and r position, the distance from this source charge. Okay, and if we plot the graph between E vector and r square, then the slope will be more. Okay, because r square will decrease in more quantity in comparison to r. Okay, these you have to remember. What I have said, this I am saying is, let's say we are comparing E vector and let's say we are talking about r square, then it will be with more slope. Okay, more downward slope, it will be something like that. Okay, you can see this is, the slope is less and here the slope is more. It is decreasing so steep in comparison to this r. Okay, so these are the graph. This is about electric field intensity. Okay, now electric field intensity is basically basically a vector quantity. Why it is vector quantity? Because it has the direction of force applied by the source charge on this test charge. इसका मतलब जिस डायरेक्शन में ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाएगा, उसी डायरेक्शन में इस सोर्स चार्ज का इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी. अगर ये वाला सोर्स चार्ज है पॉजिटिव और ये टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव होता ही है, तो इसकी वजह से ये जो है हमेशा अवे डायरेक्शन में डायरेक्टेड होता है. दैट्स वाई इस पॉजिटिव सोर्स चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो ऐसे करके होगी. इट मीन्स अवे फ्रॉम दिस चार्ज. और अगर ये हमारे पास होता नेगेटिव चार्ज, सोर्स चार्ज सपोज करिए कि हमारे पास नेगेटिव है, तो इसकी डायरेक्शन इस सोर्स चार्ज की टुवार्ड्स होती. बिकॉज इन दैट केस this test charge would have been attracted by this source charge. Okay, what I am saying is, let's say it is minus q charge, तो minus q charge की तरफ ये जो है हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ अट्रैक्ट होगा. So this will be the direction of electric field intensity due to this source charge. Is it clear everyone? I think ये आपको समझ में आ गया होगा. और ये मैंने आपको सारा कुछ बता दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में. ओके, नाउ हाउ वी यूज टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी सोर्स चार्ज. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं अब. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक field. Let's say we have a q tensed q a source charge at some point, certain point O. अब हमें इस q चार्ज की वजह से क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना है. तो बेसिकली इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, हम इससे किसी पोजीशन पर टेस्ट चार्ज को रखते हैं. लेट्स से इस पोजीशन पर टेस्ट चार्ज रखा, तो इसकी वजह से ये वाला जो टेस्ट चार्ज है वो रिपेल होगा ऐसे करके. अब मान लीजिए इस पोजीशन पर हमने टेस्ट चार्ज रखा, फिर से रिपेल होगा. ओके, इस पोजीशन पर टेस्ट चार्ज रखा, फिर से रिपेल होगा. तो अगर जिस पाथ के अलोंग इस सोर्स चार्ज की वजह से टेस्ट चार्ज जो है इसके फील्ड में मूव करता है, उस बेसिकली पाथ को हम क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे करके लाइंस से. ओके, और यही लाइंस बेसिकली क्या करेंगी, हमारा इस सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करेंगी. सो दीज लाइंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स.
what we call these lines? Electric lines of force, or more precisely we say electric field lines. तो इस इन कर्व्स को थ्री डायमेंशन में सोर्स चार्ज के चारों ओर जो हम डिनोट कर लेते हैं, इसी से ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड को, इस सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करेंगे. In conclusion, I can say the electric field of any charge, source charge, is denoted by imaginary curves. These curves are imaginary continuous curve, which are called electric field lines or electric lines of force. तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी सोर्स चार्ज के को डिनोट करते हैं. इफ सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव, देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे फ्रॉम इट in all direction, and if our source charge is negative, then electric field lines or electric lines of force will be towards the charge. Okay, so for negative charge, if we denote the electric field lines, then it will be like this. Let's say this is minus q charge, then electric field lines or electric lines of force will be toward this charge from all direction. Why? Because these will be the curves along which the unity test charge, unity positive test charge will move due to this source charge, and these will be from all direction, and these will be all continuous curves. This is how we will represent the electric field due to a source charge. Okay, there are certain properties that these electric field lines follow, and that we will talk about in our next lecture. सो थैंक यू सो मच, एंड आई थिंक कि आप इस तरीके से तैयारी करते रहिए, कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से क्लियर करिए, और जो भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो. अगर